Begin our next class in your chemistry of 3D metals. The last class में हमने discuss किया था oxidation states displayed by chromium. So today we'll be talking about the basics, the main points about oxidation states displayed by iron and cobalt. As usual, इसमें I will be discussing the main points जो important है for your exam purpose and which are also important for your future exams like the competitive exams. So there will be a link as usual, then you can use it for the you can download this, you can use it for the exam. So let's begin. Oxidation states displayed by iron, the iron key oxidation states. So सबसे पहले when you have to talk about oxidation states, atomic number of iron, that is 26. उसके बाद में step number 2, electronic configuration is argon, atomic number 18, 3d6 4s2. This is important. Now जैसे हमने पहले भी कहा ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल्स में हम कैसे निकालते हैं, जो आपके 4s और 3d में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, both these energy levels they have similar energy, they are very close in the energy, so इलेक्ट्रॉन्स दोनों से निकल सकते हैं. तो आप इलेक्ट्रॉन्स निकालिए यहाँ से, so you can actually say the oxidation state. For example, अगर आप 2 निकालेंगे तो +2, अगर आप 3 निकालेंगे यहाँ से 1 यहाँ से 2 तो +3, likely +4 +5 +6. ठीक, टोटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल +6. लेकिन इसके अलावा समटाइम्स आयरन कैन आल्सो एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, सो द ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स नेगेटिव. लाइकली आयरन इन द कार्बोनिल कंपाउंड्स, जैसे हमने पिछली क्लास में भी कहा, ट्रांजिशन मेटल्स विद द कार्बोनिल कंपाउंड दे यूजुअली फॉर्म the elements, they usually form the compounds with the zero oxidation state, ठीक, because carbon is a neutral ligand. So in nutshell, the oxidation states displayed by iron are -2, it can accept 2 electrons, 0, +1 +2 +3 +4 and +6. +6 means सारे इलेक्ट्रॉन जो आपके D6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी जो आपके D6 के आप इसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं D6 में, और 4 इसमें आप 2 निकाल सकते हैं, सो दैट बिकम्स +6. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये जो सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है इनमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ आयरन इन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर +2 एंड +3. सो +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा इसमें नोन है, वेल नोन, यानी इसके ज्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं. एंड नाउ द नॉमेनक्लेचर इज देयर. अगर आपके कंपाउंड जिसमें आयरन इज प्रेजेंट इन +2 स्टेट, दे आर कॉल्ड फेरस कंपाउंड्स. इनको हम फेरस देते हैं, जैसे FeSO4 फेरस सल्फेट. ठीक है. लाइकली दोज कंपाउंड्स वेयर द आयरन इज प्रेजेंट इन द +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, दे आर कॉल्ड फेरिक कंपाउंड्स, जैसे FeCl3 इट्स कॉल्ड फेरिक क्लोराइड. नाउ अब उसके बाद में लेट्स सी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स. आयरन वेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2. व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, सो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है. नाउ इसके पास कितने होंगे, 26 + 2 28, so it is 3d8 4s2. Example FeCO4 2 negative. ठीक है. Then zero oxidation state as usual, से मैंने कहा you can easily remember this carbonyl compounds. For example pentacarbonyl iron, simple. Remember one example. +1 oxidation state means आपको जो normal electronic configuration था इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है. हम जानते हैं when we have to remove the electrons it gets removed from the s. ठीक है. तो 4s से आप एक निकाल लीजिए, दिस बिकम्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड दिस इज द एग्जांपल. ठीक है. नाइट्रोसो लिगैंड. +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, आप s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, सो इट बिकम्स 4s0. एंड देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स. I can help you that with the, you can remember the examples like ferrous sulfate, or सबसे बेस्ट एग्जांपल्स you can remember this पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे भी आएगा, इस पे हमें प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है. सो यू कैन रिमेंबर दिस पोटेशियम हेक्सोसायानोफेरेट. हियर द आयरन पोजेसेस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट. आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, व्हाट इज द मेथड. ठीक. देन +3, सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. 2 आपने S से निकाल दिए, एक यहाँ से. यू कैन रिमेंबर द एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल FeCl3, और यू कैन आल्सो एग्जांपल दिस वन K3 FeCN6. Now in the +4 oxidation state आपने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 2 S से 2 D से. So this is the example. Likely for +5, so you are removing 5 electrons, so this is the example. And for +6, this is the example. Now among all these, I suggest
यू कैन रिमेंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आई विल जस्ट मार्क इट फॉर यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वन शुड रिमेंबर, दैट इज दिस वन एग्जांपल कार्बोनिल्स, एंड फॉर दैट यू कैन रिमेंबर दिस पेंटोकार्बोनिल आयरन, देन यू कैन रिमेंबर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ फेरस सल्फेट भी रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है पोटेशियम हेक्सासायानोफेरेट, ये दिस वन K4 state, and then for +3 you can take any example FeCl3 or you can remember K3FeCN6। तो ये दो एग्जांपल्स आप रिमेंबर कर सकते हैं, रेस्ट आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और इनमें से भी आई विल गो टू द पॉइंट नंबर हियर, Fe3 is more stable than Fe2। among Fe3 and Fe2, Fe3 is more stable, क्योंकि जब आप Fe3 को देखते हो, let us see, it is D5 is half filled। तो जब हम जानते हैं whenever the energy levels are half filled, when the orbitals are half filled or completely filled, they are extra stable because of the exchange energy and symmetry। So this is all about the important points regarding the oxidation states displayed by iron। Let's move to the next। Now cobalt। Cobalt सबसे पहले atomic number we should know 27। Write down the electronic configuration, argon 3d7 4s2। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली आप ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, लेकिन फिर बीच में जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है -1 0 then +1 +2 +3 +4, दैट मीन्स कोबाल्ट कैन आल्सो एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन। सो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, जितने भी कंपाउंड्स के बनते हैं, इनमें इस तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट पाया जाता है। Now as far as the importance is concerned, +2 +3 oxidation state becomes more common, +2 and +3 oxidation states are more common, +2 and +3 oxidation states, just like the iron we had +2 and +3। So if we put the nomenclature for +2, those compounds where cobalt has +2 oxidation state, they are called as cobaltous compounds। For example, cobaltous chloride, likely those compounds of cobalt where the oxidation state is +3, they are called as cobaltic compounds। Simple। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम सफिक्स ऐड करते हैं वर्ड IC इक, और जो लो ऑक्सीजन स्टेट उसके लिए सफिक्स ऐड करते हैं OUS। फॉर एग्जांपल कोबाल्टस, फेरस, ठीक है, एग्जांपल। तो इट इज इंपॉर्टेंट यू कैन जस्ट रिमेंबर एटलीस्ट दीज टू। कोबाल्ट +2 के लिए यू कैन पुट वन मोर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हेक्सा एक्वा कोबाल्ट। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एटलीस्ट रिमेंबर वन एग्जांपल, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सो यू कैन रिमेंबर दिस आल्सो एटलीस्ट वन। देन फॉर कोबाल्ट +3 the striking example is this one, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, this example hexaamine cobalt chloride, ये एग्जांपल। और यू कैन आल्सो रिमेंबर इसी का डेरिवेटिव है ये वाला, इसको हमने आयनाइज किया। देखिए इस कंपाउंड को जब आप आयनाइज करेंगे तो दिस Cl3 विल गेट रिमूव्ड एज Cl नेगेटिव, यहाँ पे बनेगा प्लस, तो इसी का आयनाइज्ड फॉर्म है। इसके अलावा इसका ये भी फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईथलीन डायमीन वाला बाइडेंटेड लिगेंड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, कोबाल्ट +2 इज मोर स्टेबल। अब स्टेबिलिटी की बात हो रही है, कोबाल्ट +2 इज मोर स्टेबल इन द एक्वा सॉल्यूशन, यानी कोबाल्ट का जो साल्ट है आपका which has oxidation state of +2, if you dissolve this water, now that is the CO2+ is more stable, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, so obviously water is the ligand there and water is a weak field ligand, but if you have a strong field ligand, अगर कोबाल्ट के साथ अटैच्ड है ligand which is strong field like cyanide, like ammonia, इसको आप मान सकते हो strong field, likely carbonyl, यानी जो higher strong field ligands है, वहां पे you have this cobalt +3 is the most stable oxidation state। तो आप इसकी एग्जांपल यहां देख सकते हो, this is the striking example, the cobalt +3 state, this one। Why it is more stable in presence of a strong field ligand? Because of high crystal field stabilization energy, इसको हमने पढ़ा हुआ already। So this is all about our today's class। If you have any questions, so you can write down the message, you can write down the question, inshallah we'll get back to you। So this is all about our today's topic। इसमें हम मेन पॉइंट्स गैदर कर रहे हैं, so you need not to worry about the extra matter, लेकिन जितना है उसके एग्जाम्पल, जो मेन एग्जाम्पल्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्लीज रिमेंबर दोस।
सो दिस इज ऑल फॉर द डे. यू नीड द नोट, यू कैन गो टू द डिस्क्रिप्शन, वहां पे लिंक होगा, आपसे डाउनलोड कर सकते हो एंड यू कैन यूज इट फॉर द एग्जाम पर्पस. सो थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर द डे.